When we move to a new country, what is the first thing we do? Look for an accommodation? रहने की जगह? Maximum time it's a rental apartment. There are two types of accommodation which people look for. First type is shared accommodation, और लोगों के साथ रहना. This makes sense if you're coming as a single person. Second thing is renting the whole apartment. पूरी property ही rent करनी है, and that is mainly for people who are moving with the family, or of course you have a budget. In this video, we will be focusing on the second point, which is renting the whole property or an apartment. But how does it work? What type of challenges we face? We will be going through step-by-step process how this rental thing works. Starting from searching, inspecting. Inspection also includes आपका ऑफिस कितनी दूर है, ग्रोसरीज कितनी दूर है, चाइल्ड केयर या स्कूल कितने ज़्यादा लोकेलिटी में है, कितने अच्छे हैं, plus applying and finalizing the application जो paperwork होता है with an agent, plus the bonus point how to investigate the property. Is it worth living? कोई history है उसकी? कोई murder तो नहीं हुआ हुआ property में है? All that thing. I'm Paras and this channel is all about helping Indians abroad. First thing to start is finding your options on the website. In Australia, we have two most popular websites. One is real estate and other is domain. These are the major platforms from major countries like UK, US, Canada, and New Zealand. It doesn't matter wherever you live, हर country में कोई ना कोई real estate की website होगी, but the process will always be the same. Let's jump into the website. मैं एक सिडनी का एग्जांपल ले रहा हूं जो मेरा फेवरेट सबब है रोड्स. I like this one. It's a two-bedder, study room भी है, 2 bathroom and 1 car park, and it's $1,100 per week. So ये मैंने एक प्रॉपर्टी सिलेक्ट करी है. इसकी इंस्पेक्शन मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं और क्या-क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है. Let's go to the property. Okay guys, here we are at the property, the one we selected. So the first point when you reach at the property to inspect is you will look for this type of board. So all the agents put their board that here the inspection is going on, this is where we are. We will meet and greet the property agent, and from here agent will take us to the property. So let's go. So how was the inspection? अच्छा लगा प्रॉपर्टी देख के? एक वार्म फीलिंग आई कि हाँ यार, you can visualize यहाँ पे रह सकते हैं, नहीं रह सकते. This is the protocol everyone follows in the whole country or across the world. आपको फर्स्ट एजेंट मिलेगा, मीट एंड ग्रीट करेगा, and then he will show you the property around. Now next step, researching about the property. अब हम गए थे प्रॉपर्टी पे, उसका रेंट देख लिया हमने. अब हम फिगर आउट करेंगे क्या रेंट जस्टिफाइबल था, एजेंट ज्यादा तो नहीं मांग रहा है. दिस इज द वेबसाइट कॉल्ड property.com.au. इस वेबसाइट से पूरी की पूरी हिस्ट्री निकलाती है प्रॉपर्टी की. नाउ लुक एट दिस, पूरी की पूरी हिस्ट्री है यहाँ पे. दीज आर द फोटोग्राफ्स ऑफ द प्रॉपर्टी, और इस पे ध्यान देना फ्रेंड्स. इसका रेंटल इनकम है, हाई कॉन्फिडेंस इज $955 पर वीक, हाई रेंज इज 1075 पर वीक, एंड लो रेंज इज 835 पर वीक. सो दिस इज द मीडियन, और एजेंट हमसे मांग रहा है 1100 पर वीक. अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है, एजेंट हमसे क्यों ज्यादा मांग रहा है, जबकि हमारी रिसर्च कहती है हाई कॉन्फिडेंस रेंट इज $955. एक फैक्टर मैं बताता हूं, जब भी आप प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट करने जाओगे, लुक एट हाउ मेनी पीपल आर इंस्पेक्टिंग दैट प्रॉपर्टी. भीड़ है या खाली है,
More the demand, higher the price. Lower the demand, lower the price. And you have the bargaining power. मैंने देखा था as soon as we entered there were more people looking at the property. That means property को बहुत सारे लोग देख रहे हैं. To get the better chances हमेशा $5-10 increase करके ही rent की application भरना. But अगर आपको लगता है कि property में ज़्यादा लोग देखने के लिए नहीं आ रहे हैं और आप ही देख रहे हो प्रॉपर्टी को या एक दो और देख रहे हैं तो कॉन्फिडेंस ज्यादा स्ट्रांग आपकी तरफ होगा. तो आप हमेशा बार्गेन भी कर सकते हो, डिस्काउंट भी मांग सकते हो कि यार $1100 का रेंट है, कैन यू डू सम डिस्काउंट एंड गिव इट टू मी फॉर 1050 और मे बी 1000. आप देखना कितनी भीड़ है, कितनी ज्यादा डिमांड है प्रॉपर्टी की एंड डिसाइड योर रेंट बेस्ड अपॉन दैट. मूविंग फॉरवर्ड अब आपको देखना पड़ेगा योर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चाइल्ड केयर, स्कूल या हाई स्कूल कितनी दूर है प्रॉपर्टी से. सो इफ यू लुक एट दिस, it says nearby primary schools. We got 4 schools here and with the distance, and you got secondary schools 5-6 दिखा रखे हैं. Child care भी दिखा रखा है, nearby child care काफी सारे हैं, and then you got similar properties for sale. So this was all about property research. So look at this, if the criteria is matching, your budget is matching, near about surroundings are matching, and still if you really like the property, let's move forward in applying for the rental. Coming back to the website, now if you see, there's an option to apply for the property. So I'll click on this property. This is your application now. अब इस application में ये सारी चीजें आपकी पूछेंगे. Your personal details and about your history, employment history, as well as your income. And then tenant check. Tenant check is an optional thing. It's a paid service. If you apply this, you become a legit person and higher the chances you get selected for this property. Now, congratulations, you have successfully applied for that property. What will happen next? After this, agent will discuss all the application with the owner, and owner has the power to decide किसको property देनी है. One tip over here, owner always asks agents feedback कि जो आए थे प्रॉपर्टी देखने ये कैसे थे, ढंग के लग रहे थे या लग रहे थे कि रेंट पे कर पाएंगे या नहीं, या डिफॉल्ट तो नहीं हो जाएंगे. सो मेक श्योर यू ऑलवेज ड्रेस अप प्रॉपर्ली, अच्छे से बन के जाओ और एक अच्छा सा एटीट्यूड कैरी करना, नीडी और बिल्कुल क्लिंगी मत बनना, बिकॉज एजेंट इज ऑब्जर्विंग यू व्हाइल यू आर लुकिंग एट द अपार्टमेंट. एजेंट आपको देख रहा होता है, आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है. क्लोजिंग द डील. So next point, finally, अगर आप shortlist होते हो, you will receive a call from the agent that congratulations, you have been shortlisted, and if you are still interested in the property, then the agent will send all the paperwork to you जो आपको भरने पड़ेंगे. Always remember, the bond you will pay, bond as a security, it will always be kept with the state government. ना वो agent रख सकता है, ना वो owner. You will have a bond agreement created, and you can check your bond on a government website. There is always a state government helping you and keeping your bond. So that's how you find your rental property easily. But before I go, I want to ask you, have you heard about this term called rentvesting? If not, check out this video over here, because that video will tell you what rentvesting is and how you can build wealth just by paying the rent as well as building your property portfolio. You will never know, this might be the secret sauce you have always been looking for. I will see you over there.